Okay, so today, first of all, this we have done. First of all, we'll revise what we have done already because I know that we have done a lot of things. After that, I will give you a gist of about what is COD, pronom, but not in depth because we have to revise the verbs and we have done a lot of things. We have to revise those for maybe 2 weeks and then we will move to this topic. But I'm just going to give you a just what it is because I think that you started reading in French now, and you will see these things a lot. From then you tend to question yourself why there is le before the verb. I did not even add from where it comes. I never seen or la or le before the verb. Is it then you ask, is it article? No, it's not an article because definite articles generally we tend to use them before our name. Okay, is it a masculine singular? What's that? So just to clear that doubts, so I'm going to tell you what it is, and we will come to that in maybe couple of weeks when we have strong basics. We know the verbs, we know what is what are pronouns, how to find that, how to find subject, how to find objects, and how to and if you start making some sentences for everyday use, and then we will come to this topic. But I know that you have already started reading in French and listening to French music and podcasts. So that's why I'm going to tell you what it is, but in depth we will do afterwards. Okay. So what is object pronoun? We use generally an object pronoun. En français, on appelle ça complément d'un objet. In English, it's object pronoun. If you want, I can open the French content as well, but let's just clear the basics first and then I'll move to the French content. So, complément d'objet. What's that? It's just an extra information that is being provided to state what the subject is doing. So in the phrase, if we take any phrase, we have three things. Basically, we have subject, that's je, tu, il, elle, nous, vous, il pluriel. We have a verb that states which action is being performed by the subject, and then we have some information that's extra, and this is called complément d'objet or object pronoun in English. So basically, there are four types, but we will just discuss two major categories: that COD, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. So what's direct? When there is no preposition linked to that. So we have some information after the verb and come, for example, je mange le gâteau. So le gâteau is COD because there is no preposition before mange, before le gâteau, and after mange. So it's je mange quoi? So to have that clarification, you have to ask yourself, je mange quoi? And that quoi is le gâteau. And then comes complément d'objet indirect. And in that, for that specific case, you have a preposition, generally a or the, that links. Comme par exemple, je vais à Paris. Je vais à la piscine. Je vais au restaurant. So you see here, I have preposition a inside after the verb that's brought by the verb ale and before the noun, right? So you have to see that. Is it first question that you have to ask yourself, is it COD or COE? COD ou COE? COE en français. So like I said, so you have to ask, I eat what? If it's simply what, and you know the answer, je mange la fromage. Le fromage, ici, c'est COD. And then
What we have to replace generally? Forms. So what forms of pronouns we have? So we have le for masculine. So if I want to replace le fromage, I will use le bien l apostrophe. If I want to replace la pizza, then I will use la ou bien l apostrophe if the next word is a vowel or h silent, h muet or a vowel. And I will use les if it's a plural. Could be any masculine or feminine. I eat the cheese, je le mange. But we have some exceptions. I don't know why I will. So generally with the verbs like aimer, adorer, ou détester means to hate, we often use ça. So I will delete this one. It's not good. I love the soup. Je l'aime. No, we don't say je l'aime. We say j'aime ça. Because with these verbs specifically, when you express your sentiments, you can note it down. Sentiments like aimer, adorer, détester, bien vouloir, faire ça. So there's a list of these words. When you use these words, then you have to say j'aime ça and not use the pronom complément le, la ou bien les. Any questions of pronoun, please? Okay, no questions. So moving forward, now comes where we tend to place them. Okay, where we tend to place them in a sentence. If simple sentence, okay, in a simple sentence, we tend to place them before the verb that's conjugated already. Je le lis. Je lis quoi? Je lis le livre. Je le lis. Je la mange. Je mange quoi? Je mange la pizza. Je le mange. Je mange quoi? Je mange la fromage. So if let's say I were to say some sentences, je mange le fromage. Tu t'en veux-tu? Okay. So how would I say that? Oui, j'en veux. So generally the francophones tend to respond like that. And then you say, what's that? From where is coming from? That's the pronoun complement that's replacing the that's replacing. And so if we have not done passé composé, I will make sure that we do that. So in passé composé, I have told you basically that 90% verbs, more than 90% verbs, we use auxiliary avoir to conjugate that. You have to cram this. What is the past participle of verb voir? That's view. If I ask you, what's the past participle of verb parler? Can you tell me what is that? Quickly. Past participle. Past participle from the past tense. Parler का की होगा? Parler. हैं? नहीं. Parler होगा parler. Parler. हाँ. Past participle. हाँ, क्योंकि वो एक्शन लग जाएगा उस पे. Exactly. What's the Shanti? Shante. Shanti. दसो. Shante with the Très bien. hexagraph. Écoutez. Écouter. Écoutez. Écoutez. Très bien. Voir. Voir. Voir the view. Vous.
Varunda Dekhna, right? देखना I just told you that I'm gonna go to the list again. So my favorite website, Cliff Notes French one, regular verbs. So I just told you, if you remember from the past, that to just learn this by heart, past participle. So ER verbs, parler, parler, ER, verb, finir, fini, RE, vendre, vendu, encore ER, place, placer, placer. So it's very simple, guys. You don't have to learn much, but except from the few irregular verbs which you need to learn. And apart from that, you will see that majority of the verbs, it's very simple. The way we pronounce them, the way we write it. So I say acheter, acheter. It's I have to keep in mind that I am writing in the passé composé, so I have to write it differently with accent grave. Sorry, accent aigu. Rumi, accent grave होता है ये वाला? Axigue, sorry. Yes, yes, yes. मैं भी भूल गया. मैंने भी हाँ कर दिया ऐसे. So this is accent aigu. Give. This is accent grave. Uh, Circumflex. डॉट वाला किसी का वो खेमा. 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 वो भी कर लेंगे. ठीक है. So yeah. So please come prepared with this. And acheter, appeler. So you see, appeler. When I conjugate that, I have to keep in mind that I have to write double L with j'appelle. But Then it's when singular in past. it's the when I pass participle, it's same like Yumi said, just as is, and accent aigu, remove er and add accent aigu. Simple. Jeter, répéter. So that was for regular. Now moving forward to irregular. For irregular, you have to learn, cram that by heart. Ale is ale, like that. Avoir is you. Boire is bu. Connaître is connu. Connu. Devoir is do. Dire is dit. J'ai dit. Okay? Avec T. It's like third person. The third person, yeah, exactly. Dormir is dormi. Écrire, écrit. And être is été. Okay, please don't get confused between été and eu. Eu is for avoir and être. Été is for être. Okay. Faire, fait. Lire, lu. Mettre, mis. Ouvrir, ouvert. Partir, parti. Pouvoir, pu. Prendre, pris. Recevoir, reçu. Savoir, su. J'ai su, I knew. And sentir, senti. J'ai senti. So we can use that for feeling as well. J'ai senti mal. I felt bad. J'ai senti bien. I felt good. And we can also use it for smell. Ça sent bon. If we're cooking something, you can say ça sent bon. So ça sent bon. Ça is nothing, just shows. And sent is the conjugation of verb sentir. And bon is good.
Servi means servir. J'ai servi. Sortir, sorti. Venir, venu. Voir, view. When you will start up, when you will learn that, you will also try to tend to think that, okay, voir is OER. View is also similar. And before that, we have done that, okay, something OER. See, savoir is also ending in OER, and we have su. So you will see that there are also some similarities in these irregular words, but you have just to see reservoir, same, resu, and pouvoir, pu. There is no other way. You have to cram. You have to make notes, and you have to cram them. You have to make cards, and if you want to make the cards on the app, like I said before, you should, if you had some time, then you can also play with Anki app, and you just try to make some remembrance cards on Anki app, and then I can maybe share to everybody those. If anyone creates something that's really good for education, for learning, and I can circulate that in the group. If I come across something that somebody has made Anki on the Anki app, somebody has made something that's helpful for memorizing, cramming things, I will share it to the group as well. I think in this weekend I found from my emails I found really from very useful resources to learn French. I also did if you happen to see that video on Instagram, and I will share that resources with you as well. But there are just intermediate resources. If you want to play with them, feel free whenever you have time. But they are intermediate resources. Okay. So next comes sortir means to sorti. J'ai sorti. Venir, venu. Voir, vu. Vouloir, voulu. So please revise these present conjugation of these 24 verbs, and then along with that, the past participle of these 24 verbs. If you want, I can help you with some practice exercises, because it's been some time that we didn't look at these, and I know that we tend to forget. And perhaps today we can do maybe a quick revision. I can give some exercises, and I'll ask you that which verb should come here, which form. It will help you to maybe revise quickly the concept, and if you want. Okay, moving back to the topic where we were. So in the past composite or past tense, so we have to add that before the auxiliary. Je l'ai vu. Okay, so auxiliary is avoir conjugated with je, and this L apostrophe is replacing the film. I saw the film, je l'ai vu. And I told you from where view came, right? Okay, so when we have a verb that's conjugated and we have an infinitive that's not conjugated, we tend to add that before the infinitive. I want to eat the cake, je veux le manger. So with avoir and être, passé composé, you have to add it before, but when you have verb that's infinitive, you have to add that after. So when comes the affirmative? Affirmative is giving orders, maybe giving requests.
in a familial setting. So then it comes after. Watch TV, regard la. Regard la. But the negative imperative is ne le regard pas. It comes before. And you have to also add this tredinho between these regard la in affirmative. So I just repeat quickly. In affirmative, we just have three subjects that are conjugated. Deuxième personne du pluriel, tu forme. Première personne du pluriel, nous forme. Et deuxième personne du pluriel. C'est quoi? Vous forme. We have only, with only these three subjects, we use imperative form. And with imperative, the complement, the objet, the pronom, it comes after the verb, the hyphen. So in your notes, please write it down, hyphen, highlight it maybe, and then it comes the pronom la. But in negation, it comes before the verb. Ne la regarde pas. What's la here? La télé. Télévision. La télévision. So instead of coming before the subject, it will come before the verb. Okay, could you please repeat that? So ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਸਬਜੈਕਟ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਉਹ verb ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾ। ਹਾਂ ਲਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਬੱਚੂ ਐਕਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚੂ ਲਾ ਫੋਰਮਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ do you want cheese je le veux je le veux so ਇੱਥੇ ਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਟਿਵਸ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਿਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਰਬਸ we use partitive right so we tend to say this what you fromage ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ because ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਣੇ ਹਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल लेने virtue ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੁਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਖੜ ਜਾ ਬੁਲਵਾਰ ਬੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬੁਲਵਾਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ virtue ਜੀ ਪੁਲੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਜੋ ਬੋਲਾ ਪੁਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਂਵ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਲੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਆ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਪੁਲੇ ਇਹਨੂੰ same veux-tu du fromage j'en veux qui garda replace but keep in mind that in the sentence or in a paragraph we have talked about that complement before only then we replace and not we tend to replace like we have something in our head we created already and it's not been discussed about and we don't replace that so we are talking about going to Paris or swimming pool ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਓਕੇ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ CLB ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
नहीं, ठीक है वो प्रोनाउन ते एक और ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ सर्च करा मैं गूगल पे। नहीं बस कंटिन्यू चलो दसो मैंने जो बाद पता लगा था, मैंने है याद नहीं आ रहा। बच्चों जो खमाज इंग्लिश आप कितना करते हैं, आई विल, वुड यू लाइक सम चीज, यस आई वांट सम चीज। आप कभी इंग्लिश है ही नहीं यार, इंग्लिश कितने का। है आई वांट इट आई वांट इट है ना, आई वांट इट, आई वांट इट, इंग्लिश इट आ ਜਾਂਦਾ ना इट बहुत इट आई एम। इट दे देम फॉर पीपल ऑब्जेक्ट्स ਲਈ इट आ गया दैट आ गया हाँ पर ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏ ਲ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਚ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੁੱਕ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਬਦਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਨਾ, ਆਈ ਲਵ ਇਟ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਹਰ ਵਰਡ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਰਬ ਸਿੰਬਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਆਕਸੀਲਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਵਰਬ ਕੰਜੂਗੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਟਸ ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਿਚ ਇਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਰਿਚ ਇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਰਿਚ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਐਂਡ ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਚਲੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਫਾਰਮਸ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, what we tend to replace, it's l apostrophe for masculine, feminine and plural is lay, and then I also told you where to place them in five, technically four ही है but five, affirmative ਦੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ verb ਹੋ ਗਿਆ infinitive, ਹੁਣ I just want to tell you that passing composite is an example, passing composite is just an example, but if you tend to see plus que parfait, j'avais vu, then also it's je l'avais vu, same thing, so je l'avais vu, same thing. Now coming to the second one, that's indirect object pronouns, COE. Before you had to ask the question yourself what, okay, now you have to ask question to yourself to what or to whom. See, before je mange la pizza, je mange quoi, I eat what. Now the question that should come is to what or to whom. Je parle à mon ami, I speak to my friend, je parle à qui. So then this question is to what. Okay. And these are the pronoun forms: me, te, lui, nous, vous, leur. Let's understand it with the help of certain examples. Il me téléphone. He calls me in English, so in English comes after, but in French it tends to come before. So if I were to say in French, very funny thing I'm going to tell you here, I miss you. How would you say that in French? je whatever the word is for miss It's tu me manques. tu me manques It's tu me manques. It's not je. या वही ना वो पुट्ठा हो गया फ्रेंच में पुट्ठा कर देते हैं बट मैंने तो समझ नहीं आया था कंसेप्ट पीछे, मतलब इंग्लिश कहते आई मिस यू, तो फ्रेंच कहते तुम मुझे याद कर रहे हो, तो उसका मतलब यही है कि आई मिस यू। तुम उसका बन गया तुम्हें मैं मिस कर रहा हूँ हाँ, tu me manques, tu तुम्हें me मैं manques, मिस कर रहा हूँ तुम मुझसे मिसिंग हो जाया था कुछ। नहीं बन गया ना तुम्हें मैं मिस कर रहा हूँ हाँ, tu me manques, तुम्हें मैं so बट ये आपको सिर्फ मतलब उनका लिखने का तरीका सिंप्लीफाइड है बट बात वही है तुम्हें मैं मिस कर रहा हूँ
जैसे हम तुम्हें, क्वेश्चंस में करते हूँ से की समथिंग लाइक दैट, कि हम पहले यूज करते हैं, हाँ। व्हाट इज इट, वो फ्रेंच कहते हैं इट इज व्हाट। सो वही है ना, जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए ये चीज, आपको तो हिंदी पंजाबी दोनों आती है, राइट, यू आर पॉलीग्लॉट्स। सो आपके लिए इजी है, तुमने जैसे कहा अभी, तुम्हें मैं मिस कर रहा हूँ, दैट्स परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दैट। बट जो बंदा इंग्लिश बोलता है उसका व्हाट दैट स्टूपिड, आई मिस यू, टू, यू मिस आई। मतलब मतलब हमें तो जैसे हिंदी आती है, हम मिनट में मैंने लगा लिया इसका अंदाजा, यार सही है ये, सही बात कह रहा है ये। सही कह रहे हो, बस वो उनका वो फॉर्मेट डिफरेंट है। बट जो ओनली एंग्लोफोन स्पीकर है, उसके लिए तो ये क्या है, ये क्या ही है ये। तुम्हें मांझ, आई मी मिस, हाँ, तो उसके लिए तो ये क्या ही है, कि क्या पर है यू ये मी मिस, stupid। यू मी मिस, हाँ, उसके लिए यू तो आर। फिर क्या ही है। हमारी लैंग्वेज चलो मिलती है इससे, हमने मिनट में बता दिया यार, ठीक है यार, ये तुम्हें मैं मिस कर रहा हूँ, राइट। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फॉर मी एज वेल इन द बिगिनिंग, क्या है यार, बट एनीवे। मुझे जब ऐसा फील हो, अगर हम बचपन में फ्रेंच पढ़ लेते ना, ज्यादा इजी होता, तो वो तो है ही यार, बचपन में। क्योंकि वो हमें फ्रैंक, कन्वर्ट करना बहुत इजी होता। हाँ, हमें अगर फ्रैंकोफोन ने रूल किया होता तो परहैप्स हम फ्रेंच ही बोलते होते अब तक। हमने गोरों ने कहा था, यूके वालों ने। एनीवे, चलो। She writes to her brother L. Louis Ikri. So same, the question that I have to ask myself is L. Ikri to whom? Okay, Aki. जैसे Aki. एलवी इकरी इंग्लिश वाले के लिए सेंस थी बनी, शी हिम, राइट। She, him, right? हम हिंदी वाले सोचेंगे वो उसे लिखती है, हाँ, हमारे में तो सेंस तभी बनेगी। सब सेंस बनती है हमारे में। तो वही है यार तो भी। अगर पूछो वो से खत लिखती है, हम बोलेंगे हुई। हाँ वो से लिखती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो या एल लुई इखरी, पर पता होना चाहिए भी ये मतलब लुई कहाँ से आया। तो टू हर ब्रदर। थर्ड पर्सन प्लूरल। हाँ, 1000% एग्जैक्ट। très bien। और ओके, दे स्पीक, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अभी। सो इफ शी राइट्स टू हर सिस्टर, ये क्या आएगा। किसमें? मैंने क्यों सुन अभी, सेम सेंटेंस, शी राइट्स टू हर सिस्टर आ गया, तो इसमें क्या आएगा सेंटेंस। एलयू इकरी। एल लुई इखरी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, जैसे आपने कहा ना प्रोनाउन टॉनिक, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस, हम्म उसके लिए एल एल ही है। हम्म इसके लिए एल भी लुई है। लुई हम्म तो लुई है ही है, ही तो लुई है ही है, पर इसके लिए एल भी लुई है। देखो, आई गिव यू रीजन, ओके, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं होनोटोनिक, हम्म, ये सामने पढ़े मेरे। हाँ हमने देखा था अभी, लुई इज फॉर ही और हिम, या व्हेन वी टॉकिंग अबाउट शी, सो इट्स एल, एल। राइट। ये टॉपिक ये कहाँ गया ये, देखो एल है ना इसके लिए, हाँ बट यहाँ पे एल नहीं है इसमें, इसमें तो एल भी लुई है। लुई है, एल भी लुई है इसका। हाँ तो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसका हिम हर के लिए, दोनों के लिए लुई है। या अगर मल्टीपल का देन ल्यू, हाँ, अगर प्लूरल है तो तो लर। ल- देखो अगर नेक्स्ट सेंटेंस है लर, तो या नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, दे स्पीक टू देयर पेरेंट्स इल लर पार्ल। ठीक है, ल्यू। चलो ये तो फिर थोड़े से एग्जांपल थे, अभी हम देखते हैं इसके मतलब प्लेसमेंट कहाँ करनी है। तो ये पहले होगी वैसे, बट एनीवे, लेट्स रिवाइज। सो आई टॉक टू पॉल, सेम, सिंपल सेंटेंसेस, इट ये वर्ब के पहले आएगा, सो इट विल कम बिफोर द वर्ब, पार्ले मींस टॉक।
Je lui parle. Compound sentences, that's in the past composite, in the past tense. I wrote to my mom, je lui ai écrit. So same. यहाँ पे भी ऐसे आया, je l'ai vu, यहाँ पे भी ऐसे है, je lui ai écrit. अब बात करते हैं imperative. Same, same as that COD. I want to call my friends, je veux leur téléphoner. Affirmative, talk to your teacher, parle lui. Same. Negative, don't talk to your teacher, ne lui parle pas. So, what you have to keep in mind is if you can cram it, learn this, any one of these by heart, second one becomes very easy. And also, please note that CO never take an S, okay? Even for plural. So, I want to call my friends, je veux leur téléphoner. ਵੀਰੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ I wrote to my mom je lui a écrit Je lui ai écrit. पता है, ए कित्थों आया? ਹੂੰ It's a passive composite. oh, ਤੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੱਟੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਸ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਬ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਆਕਸੀਲੀਅਰ ਪਲਸ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿਊ, j'ai parlé, j'ai chanté, j'ai écrit. Give me some more, please. Help me. j'ai écrit j'ai chanté j'ai dansé J'ai dansé, j'ai joué j'ai joué, j'ai non donné नहीं आएगा दी j'ai dit j'ai donné, आ जाएगा क्यों नहीं आएगा? donné आएगा J'ai j'ai dit भी bois आ जाएगा, मैंने बताया उसको, j'ai dit। j'ai आगे चलो। गार्गी का फेवरेट, j'ai prié, j'ai pris, prié, prié क्या होता है? Prié, j'ai prié. आगे Écoute, j'ai écouté, j'ai accepté j'ai accepté. यार टाइप करो प्लीज, टाइप j'ai करो। appris पर दो लैक्स सारी दिखाओ मैंने कितने बार बाद जाऊंगे यार, चक दो फटे।
जे जैसे रूमी ने अभी स्नीजिंग स्नीजिंग करी है, इसको क्या बोलेंगे? ये एटरन्यूए स्नीजिंग, एटरन्यूए, ये एटरन्यूए ये एटरन्यूए, आई स्नीज्ड, ये आशते, ये vu, j'ai terminé mon travail, j'ai terminé, चलो आगे, मेरे को j'ai toussé, très bien, ठीक आ गई, ये खांसी आ गई, दोनों आ गई, उसके बाद जे ब्रीजे j'ai brisé, très bien, गागी सोच रही है ज्यादा, मतलब लगता है ना। Let's go. Gargi, Rumi 3, Gargi 0. So, she, Query ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Query. ओके मैं पढ़िया ਸੀ J'ai quitté. Cuisinier, j'ai cuisiné. कुजीन गलत लिखता ਸੀ Attends, मैं check कर रहा हूँ. Cuisinier. मैं पढ़िਆ ਸੀ मैं ਨਿਊਜ਼ ਪढ़ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਗਏ ठीक है, कोई चक्कर नहीं, that's good. J'ai cuisiné, हाँ जी, cuisiner ਸੀ ਨਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, cuisinier, verb ਇਹ ਹੈ, ਸੋ er verb ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਟਾਓ, ਇਹ ਅਕਸਾਂ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਯਾਰ, cuisinier ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, j'ai lu, R-I, j'ai lu, j'ai cuisiné. ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਿਆ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ करेक्ट करो जो मैं गलत हूँ कोई बात नहीं. इमेंटिए lie to lie ये मानती, ये मानती ਹੁੰਦਾ to lie, मानती ਹੁੰਦਾ to lie, ਮੈਂ lied, ਉਹਦਾ past participle ਹੈਗਾ मानती के ਦਾ, क्योंकि ये MENTIR आई आ गया ना, सेकंड कैटेगरी आ गया, फिर ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ आई ਆਊਗਾ, मानती, ये मानती. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹੂਚ ਜੇ ਨਾਂਜ नाजे, très bien, नाजे, बहुत बढ़िया. ਇਹ ਓਬਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰੇ ਓਬਰੀ ओब्रीर यार, मैंने सब इंग्लिश से की मतलब होता ओब्रीर, ओब्ली, ओबली टू ओबे ओबे ओबीर ई, देखना पड़ा, मैं भूल गया, ओबीर ओबी कल्ला, हाँ जी OBEI, ये ओबी वर्ब है, ओबीर. ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ EI ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਬਣੂਗੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
इन्फिनिटिव में नहीं हो भी है ना एक्चुअली वो भी j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai préféré, préféré, जिसमें पारती वही पारती आएगा ना। j'ai parti, très bien। हाँ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਆ ਗਏ 16 ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਵਰਬਸ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਹੂੰ just party ra it's one of 16 verbs where we use ether to say the past tense shvi party and not ye party shvi is ale and not ye ale shvi sorti and not ye sorti 40 yes 60 there are 16 verbs je suis monté j'ai monté je suis monté j'ai voyagé j'ai voyagé विनी विनीर je suis venu जिस venu ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਗਾਰਗੀ ਬੋਲੂਗੀ ਤੇ ਬੋਲੂਗੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਈ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਨਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਐਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਆਲੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਗਾਰਗੀ ਵੀ ਲਿਖੂਗੀ ਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਈ लिखने वाले बोलना बोलना सेम ही है शी इज आले शी सॉर्टी शी वेन्यू पर लिखने वाले थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ਐਤਰ ਥੋੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਐਤਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ बहुत ਚਲੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ये लुई ए इकरी क्यों लिखा है ਇੱਥੇ नो ਹਾਂਜੀ नहीं होया हाँ वो लुई एल वाला ना आई रोट टू माई मॉम ये लुई ए इकरी पता लगे ना आपको कह रहे थे ना भी ए क्यों आया यार कहाँ से ए आया हम्म तो मैंने उसके लिए सब कुछ करवाया एक्टिविटी सारी हम्म ए कहाँ से आया तो यहाँ अगर से मैं अभी करूँ ये सेम केस je l'ai vu can I say I saw view la film can I say that je l'ai vu अब ये अगर सी अब ये फिल्म है ना what will you ask yourself quoi it's quoi that's the question that you will ask yourself say quoi but parler है ना so I spoke to someone right à qui so j'ai lui et parlé to someone à quelqu'un à qui so देखो अभी हमने दो भी कर ली सो आ की आ गया सो ये आ गया सी ओ ये है सी ओ डी आपका अब ये आपका है सी ओ ई कॉम्प्लीमेंट d'objet en direct ये रखते हैं हम पिंक कलर का और ये है ग्रीन कलर का चलो अब बताओ इसमें क्या आएगा
किसमें इसमें इसमें je chantais un chanson. chanson. Je parle, je parle, je lui parle. Chanson. J'ai chanté une chanson और इसका अब ask yourself, is it quoi ou à quoi? I I I sang. What's the past in English? I sang. I sang. I sang. I sang. So I sang. उसके बाद something, right? And not something, not to something, right? So it's, so if you ask question to yourself, it's what I sang what. So what आएगा ना इसका आंसर what. तो Ki. फ्रेंच में होता है quoi. What. Okay. की होता है used for person. Yeah. So what is quoi, and then it's COD, and then for COD बताओ क्या आएगा. पिंक कलर. अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा. Chanson. अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने शाम को रिपीट नहीं करना, तो कहाँ पे रुकूंगा मैं इस फ्रेज में. शांत से रिपीट नहीं करना ना. Je chante. Chanson. मैंने गाया तो मैं इसको Je l'ai chanté. देखो अभी हमने करा ना यहाँ पे प्लेसमेंट, तो बस मैं आपको थोड़ा रिपीट करवा रहा हूँ. Je lui, ये नहीं कह रहा हमने COD. Je l'ai ली. अब ये रहा je l'ai lu. तो I saw कंपाउंड the टेंस का है. film. मैं वही कंफ्यूज हो गया, इसमें ले आएगा कि ल आएगा. अच्छा वो पूछना आपको, अगर देखो शामसो क्या है, इज फेमिनिन राइट, Yeah. तो ला आएगा, लेकिन Yeah. उसके बाद वर्ब के स्टार्ट किससे हो रहा है, वॉवल से. अब वो आ रहा है ना, तो वो आर से बन गया एल अपोस्ट्रोफ. Je l'ai chanté. Like I saw the film. हाँ. Here, Je l'ai regardé. Okay. here is I saw is the. Okay. I saw the film in French is j'ai regardé. Je regardé le film. Okay. Now, Gargi, what's your question, please? Like here Shanti house, here la Shanti. Okay, so that's what we are studying. Okay, it's a question that who sang? No. Okay, so what we study today is how to replace the. First of all, you have to. Okay, this is. I will remove these brackets to not confuse you. So we have seen that here. This is the verb. Okay, subject. Je. E shante is the verb. Shante is the verb. Shante. And this one is a complement de la phrase. Today, what we studied that we can replace this one with le, la, le for COD, and with COI we can replace with M apostrophe the, te, lui, nu, vous, leur. With COI, but before that, you should ask yourself question: is it a COD or a COI? How will you distinguish that? So when it's a COD, so then it's what and not to what or to who after the verb. Simple, like je mange, so je mange le fromage. I eat the cheese. So that's a COD. Complement d'objet direct. The object is coming directly after the verb and there is no preposition linked to that. But in the second sentence, so you see, I
talk to Paul, and not I talk Paul, to Paul. So in here you have to ask question, is it to whom or to what? Getting my point? Yes. It will take time, no problem. That's why we are practicing. That's why I just asked you to make me some verbs, and I will make sentences from the those verbs that you gave me with the vocabulary that you already have. No rush. It's a difficult topic. Even I sometimes get confused. But no problem. We'll take it slowly, and we'll try to build the vocabulary. And if you don't understand, please ask me time and again, and I will try to make the concept clear. Okay. So is it clear now from where L apostrophe came? J'ai chanté une chanson. Okay, let me just take a present tense. Okay, this is past tense. Okay, I will take a present tense here. Je chante la chanson. Now, it's very simple. If you want to replace this one with the pronom complement, it would be what? Je la chante. So what's la here? It's la chanson. Now we are on step number two. This is passé composé plus. This is we are also replacing this une chanson par pronom complement. Like taking the first example, je vois. Okay, first example is j'ai vu le film. Okay, yeah, un film. Okay, we'll take it in the positive in the present tense. So if I take the voir conjugation, help me please. Je vois, tu vois, il voit. Next one, nous voyons, vous voyez, uh-huh, il, What? il voit. ठीक है? So we be in the present tense. Je vois le film. Now, if I want to replace le film, how will I replace that? First of all, I have to ask myself, is it masculine or feminine? And then I will replace it if it's masculine with L or la, and then I will place it before the verb. That's voir. Je le vois. Simple. That was COE. That for that I have kept the pink color. Okay, COE is pink. पिंक क्या कहते हैं इसके फ्रेंच में क्या कहते हैं रूज पिंक होता है अपना पिंक नहीं पिंक तो रूज तो रेड हो गया रूज नहीं पिंक नहीं मैरून रोज 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 यस रोज रोजे एक्चुअली ओके इसके लिए है ग्रीन ग्रीन होता है वेट वेट ओके सो ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो इसे आपको थोड़ा बहुत इजी रहेगा तो जब मैं बात व्हेन आई विल टॉक अबाउट COE so I will use the couleur rose quand je vais parler des COD je vais utiliser la couleur verte donc ici ok j'ai l'inversé ici la couleur doit être vert parce que c'est COD
चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ अभी इसका। अभी आपको थोड़ा हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? डाउट अभी भी? नहीं हो तो गया, बट ये थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला टॉपिक है। लाइक अगर आप बहुत। एक्सरसाइज वगैरह करेंगे ना उस हाँ वो आ जाएगा समझ। आ जाऊगा। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, हाँ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਸਟਿਲ COI COD ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ whom ਟੂ what, ਹਨਾ। बस ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ when you will start asking yourself a question, is it true what or just what? इतना लिख लो आप। हम्म। So if it's just what or just key, just who, without to, that's COD, ਹਮ, complément d'objet direct। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ to what ਜਾਂ to whom, ਫਿਰ ਉਹ COE ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਉਹ COI ਹੋ ਗਿਆ। Yes, j'ai écrit à quelqu'un। ਯਾ So ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ I saw it, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ what ਹੋ ਗਿਆ। I saw what, a film। ਯੈਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। all the verbs of communication ਹਮ, that are examples ਦੱਸ ਦੇਣਾ। parler, ਹਮ, parler, écouter, jaser। lately ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ example? j'ai écrit, écrit। j'ai écouté une chanson, j'ai écrire, parler, écrire। communication ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ verbs ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। let me just check it। ਇੱਥੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਚੁੱਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ verb, ਤਾਂ ਮੈਂ send this PDF to you today। so ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਯਾਦ, that's all COI। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਰੰਗ COI ਦਾ? ਆ ਪਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, rose। so je dire à quelqu'un, je dis à quelqu'un, je parle à quelqu'un, j'explique à quelqu'un, je précise à quelqu'un, j'affirme à quelqu'un, déclare à quelqu'un, j'annonce à quelqu'un। so ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ verb ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ COI ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕੀ, COI ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ COD ਹੈਗਾ ਵੈਰ। ਯਸ ਯਸ ਯਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਵਰਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਰਬ ਸਾਰੇ ਦਿਖ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਬ ਆ ਗਏ। ਡਿਮਾਂਡੇ, ਇੰਟਰੋਜੇ, questionner, s'inquiéter, sonder। ਫਿਰ ਹਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਯੂਜ਼, ਬਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨਾ।
ਕੱਟ ਦੇਣਾ I just delete them which we don't use but ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ God bless you. Let us see. Conclude. ਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਰਬ ਦਿਖ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇ COE ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ COE ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਹੈਗੇ ਆ you know it really well now by heart our table M apostrophe te lui nous vous l'art il me parle tu me parles il m'écoute il me demande il lui parle so ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਰੂਬੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ de communication ਦੇ ਵਰਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ COE ਪਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਚੈਟ GPT ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ ਯਾਰ सो अभी ये क्या है COD COE ये रिगार्डे ले फिल्म regarde COD COD क्योंकि सीधी बात कर रहा है what एग्जैक्टली अब इसका क्या आएगा je le regarde très bien je le regarde L apostrophe क्या है इसका la film अब ये इकरी का क्या आएगा ये COI communication COE yes अब पहले बोलते हैं इकरी या कैलकन ama mer I wrote to my mother yes so उसको आएगा je l'ai écrit je lui écrit sorry हाँ क्योंकि उसकी एग्जैक्टली ये लुई इकरी ये ऐसे में आ गया कि हम अभी हमने हटा दिया तो लुई एल इसके आगे एल आ गया ना एल इज कॉन्सोनेंट सो अब किसका ये पूरा आएगा पहले हमने कर दी थी एलिजियो एलिजियो क्या होता है एलिजियो हम करते हैं जब हम कब करते हैं एलिजियो व्हेन द फर्स्ट वन इज एंडिंग विद वॉवल वर्ड एंड सेकंड वन इज स्टार्टिंग विद वॉवल सो हम इस एक का वॉवल एक वॉवल काट देते हैं उसको बोलते हैं एलिजियो तो अब हम एलिजियो नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच में लुई आ गया तो लुई स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट अब क्योंकि ये है प्रोनो कॉम्प्लीमेंट अब इसके हम ये भी खत्म हो रहा है वॉवल से अभी भी स्टार्ट हो रहा है पर अब हम नहीं क्योंकि ये प्रोनो कॉम्प्लीमेंट है तो इसको नहीं कर सकते तब फ्रेंच वाले कंफ्यूज हो गए पता नहीं क्या है ये क्या आ गया तब नहीं करेंगे इसको तो अब नहीं कर रहे ये जब प्रोनो कंपनी लगा देते हैं तब नहीं ये करते एलिजियो
नॉर्मली जब सब्जेक्ट होता है तो कर देते हैं वर्ब के साथ, दैट दे डू इट। उसको बोलते हैं एलिजियो, Elysium. ठीक है। तो ये डांस, ये danser, COD. सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे अगर डांस टू अ सॉन्ग। टू सॉन्ग है ना फिर आला चांस, तो वो COE आएगा, राइट? ये danser, ओके, चेक करते हैं रूलर प्रीपोजिशन। देखो जो danser, ah, ओके। तो फिर यहाँ पे यार ये danser आएगा sur cette chanson, ठीक है। हम्म। और danser sur cette chanson, और इसका I danced on a song. या On that song. Okay, on yeah. that song, इसका आएगा ये ਅਸੀਂ क्योंकि ਆਪਾਂ शांसुन हटा देंगे je le danse। या je la danser, फिर तो मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਜੂਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, je le ले danser, because the COD ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, you have to conjugate that as well, so ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗਾ extra e, because ਜਦੋਂ COD ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਦਾ,
ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਈ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਐਕਸਟਰਾ ਈ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਪਲੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ। ਸੋ ਲਾ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਮਸਕੂਲਿਨ ਹੈ ਲਾ ਫਿਲਮ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ COD ਹੋਵੇ ਨਾ, when in case of COD, in case of COD, we have to keep in mind the complement, whether it only in case of COD, not in only in case of COD and not in COE. It is masculine or feminine and accord the verb accordingly. So we'll continue this, okay, tomorrow, and और हम सारा करेंगे ये। बट अगर आपको टाइम लगे तो प्लीज 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 हैव अ लुक and try to read about it, and we will discuss everything in detail, and we'll try to finish this PDF as well, this document that we started. For today it's this much, and I will definitely send you just now the PDF as soon as we end the call. Any questions, please? बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।